Assalamu alaikum everyone. Let's start paper 1, AS Chemistry, multiple choice, February, March 2022, variance 12. Let's see what we have in this paper. So question number 1. What number of protons, neutrons and electrons are present in the ion Fe3 plus 54? First of all, हम सब जानते हैं कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और इसका जो न्यूक्लियन नंबर एग्जामिनर ने दिया है वो 54 है। ऑब्वियसली इसमें 26 प्रोटॉन्स होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 54 minus 26 is going to be 28 न्यूट्रॉन्स। ओके, मुझे एग्जामिनर ने कहा है कि आयन है आपके पास, Fe3 प्लस है आपके पास। अगर Fe3 प्लस है तो इसका मतलब प्रोटॉन will remain same, that is 26. After the removal of 3 electrons because of 3 plus charge, so we need to remove 3 electrons from the valence shell. Electron is going to be 23, okay, and 28 neutron will remain as it is. So we need to see कि ये composition कहाँ पर available है। सबसे पहला 26 प्रोटॉन है तो 26 प्रोटॉन्स यहाँ पर हैं, फिर है आपके पास 28 न्यूट्रॉन्स तो 28 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर हैं, फिर आपके पास है 23 इलेक्ट्रॉन्स तो 23 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, and therefore A is going to be the correct answer. I hope it makes sense to you. Now the next question is, for which hydrocarbon are the molecular and empirical formula the same? So butane is an alkane, it is a saturated hydrocarbon. इसका molecular formula है C4H10. तो अगर मैं इसका empirical formula लूंगा तो ये हो जाएगा C2H5. All right. So molecular formula is the actual number of atoms present in a molecule, and empirical is the simplest ratio of the elements. All right. Ethane का molecular formula है C2H6. अगर मैं इसका empirical find out करूंगा so it's going to be CH3. Pentwanene is an alkene. It is an unsaturated hydrocarbon. Its molecular formula is C5H10. Obviously, अगर मैं इसका empirical निकालूंगा तो it's going to be CH2. All right. Propane is C3H8. जो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा, बिकॉज मैं 3 कार्बन एटम को हाफ नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो आई बिलीव प्रोपेन, दैट इज ऑप्शन डी, इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोनों का सेम है इसलिए। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हमसे कहा जा रहा है कि जनाब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। ओके, नो इशू। Which molecule does not have any 90 or 180 degree bond angles? C2H6 is like this. Each carbon has 4 covalent bonds, which means each carbon is sp3 hybridized, and so it has a bond angle of 109.5 degree. That means okay, carbon dioxide has a linear geometry. It has an angle of 180 degree. PF5 has trigonal bipyramidal geometry. It has an angle of both 120 and 90 degree angle. This is your 90 and this is your 120. Okay, SF6 has octahedral geometry. We did that in class. And obviously it has 90 degree angle. So in SF6, this will give 90 degree, whereas this entire thing will give 180 degree. Or this entire thing will give 180 degree. So obviously A is going to be the right answer because it doesn't have any 90 degree or 180 degree bond angle. Okay, so this is 90 degree and 180 degree as well. Now let's move on to the question number 6. The following data are needed for this question. Okay, on heating, sodium hydrogen carbonate decomposes as shown.
the equation for the reaction is given. Now the main question is, what is the enthalpy change for this decomposition? Now first of all, look at this equation. It has 1 mole of sodium hydrogen carbonate, whereas in this equation we have 2 moles of sodium hydrogen carbonate, which means I need to multiply this entire equation in value by 2. So it's going to be like this: 2 NHCO3 plus 2 HCl, arrow 2 NaCl plus 2 H2O plus 2 CO2, and the value needs to be double, so 38.97 into 2. It's going to be minus 77.94. Okay, I repeat again. We have 1 mole of sodium hydrogen carbonate here, and we have 2 moles of sodium hydrogen carbonate here. And since sodium hydrogen carbonate is present on the reactant side, which means we need to multiply the entire equation and its value by 2, and we can write it as it is. Okay, my bad. This is NaHCO3. Okay, now look at this equation. Sodium carbonate is present on the product side, whereas sodium carbonate is present on the reactant side. So I need sodium carbonate on the product side, which is why I need to flip this equation. And once if I'll flip this equation, obviously the value is going to be flipped as well. So what we can write here, after flipping the equation, 2 NaCl plus H2O plus CO2, arrow sodium carbonate plus 2 HCl, and its value is going to be plus 96.59. Now we need to find out the final answer. We know 1 water, 2 waters cancel, 1 carbon dioxide, 2 carbon dioxide cancel, 2 HCl, 2 HCl cancel. So the final equation is going to be like, and also sodium chloride is going to be cancelled out with each other. So final equation is going to be 2 NaHCO3, arrow sodium carbonate plus water plus carbon dioxide, minus 96.59. So it's going to be plus 18.65, and that's my answer. So it's going to be C. Obviously, that's the only answer. Okay. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question. Question number 5. In the redox reaction shown, how do the oxidation state of vanadium and sulfur changes? So first of all, let's find out the oxidation state of VO2, vanadium oxidation state in this. So let's suppose vanadium is X. Oxygen has a charge of -2. We have 2 oxygen atom into 2. The whole charge is equals to +1. So the oxidation state of vanadium is going to be +5. So VO2 plus is +5. And the oxidation state of vanadium here is +3, right? So +5 है यहाँ पर और यहाँ +3 है. So basically +5 से +3 का मतलब ये हुआ कि decrease in oxidation state हो रही है. तो decrease in oxidation state is oxidation. +5 to +3, +5 to +3 option C में है, +5 to +3 option D में भी है. So either C or D. That means A is incorrect, B is incorrect. Let's work on sulfur dioxide. Let me change the color as well. Sulfur dioxide में sulfur की oxidation state find out करनी है तो sulfur पे X लो. Oxygen is -2. We have 2 oxygen atom into 2. The whole charge equals to 0 because the molecule is neutral. So in sulfur dioxide, the oxidation state of sulfur is +4. In sulfate ions, sulfur is going to be X, -2 times 4, whole charge equals to -2, then X equals to +6. So +4 to +6, +4 to +6 यहाँ है, +4 to +6 यहाँ है. That means D is going to be the right answer. All right.
Next, the equation for the reaction between silver chloride and aqueous ammonia is shown. What are the units of Kc for this reaction? Kc होता है concentration of product over concentration of reactant. तो मैं expression लिख देता हूँ. Product आपके पास है Ag NH3 taken to plus Cl minus over concentration of ammonia. Since ammonia has 2 mole in the equation, वो पावर में चले जाएंगे मोल्स. आप नोट करें, मैंने इस सिल्वर क्लोराइड को कंसिडर नहीं किया. मैंने सिल्वर क्लोराइड को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि इट इज सॉलिड, और सॉलिड सब्सटेंसेस को हम कभी भी Kc का एक्सप्रेशन लिखते हुए यूज नहीं करते. तो सॉलिड्स हैव यूनिट एक्टिविटी जिसको हम कांस्टेंट कंसंट्रेशन भी कहते हैं. मतलब यू नीड टू सिंपली इग्नोर दिस ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ Kc. हम सब जानते हैं कि इसकी यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब, इसकी भी यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब, दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी. सो यूनिट इज गोइंग टू बी मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6 डिवाइडेड बाय, इसकी यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, इसका अगर स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपके पास मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6. ओके, ऑब्वियसली ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल, which means there is no unit for this equation. So answer is going to be an A. Now the next question is, sodium azide decomposes as shown. Which volume of nitrogen measured at room temperature? Now two things we have. The first one is volume of nitrogen measure करना है हमने room temperature, that is at RTP. And the second thing, produced by the decomposition of 150 gram of sodium azide, and the mass of sodium azide is given, that is 150 gram. So first of all, let me take out the moles of sodium azide. So that's tough. Moles of sodium azide, that is NaN3. Mass of sodium azide is given 150. The MR of sodium azide is let me calculate. 23 plus 14 times 3 is going to be 65. So moles is going to be 150 divided by 65 is going to be 2.307. Okay. Now, in the second step, we know that sodium azide and nitrogen has 2:3 ka ratio. All right. So NaN3 and nitrogen has 2:3 का ratio. अगर हमने 2.307 कैलकुलेट किया था तो बताइए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? Multiply by 3 divided by 2 is going to be 3.461 moles, right? We need to find out the volume. So in order to get the volume of nitrogen, we need to multiply number of moles by volume, and volume needs to be in dm cubed. So I'll multiply the value by 24. Okay. So volume of nitrogen is 3.461 multiplied by 24, because 24 dm cube volume at RTP multiplied by 24, you will get what? 83.07 dm cube. So 83.07 dm cube. Bravo is going to be the correct answer. Bravo means B is going to be the correct answer. Okay, next. Stable iron N5 has been produced by research chemists. Which structure is most likely to show the electron arrangement of this ion? When we get an ion, जिसकी discussion हमने कभी भी ना की हो, just like in this case, in this question, N5 plus we have never discussed in the class. तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने ये देखना है कि सारे के सारे नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करें. ऑक्टेट रूल मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स नीड्स टू बी इन द बैलेंस शेल. ऑलराइट. और फिर उन्होंने जब ये कह दिया हमसे कि ये स्टेबल है तो इसका मतलब हमने ऑक्टेट देखना है. ऑक्टेट, वी नीड टू चेक ऑक्टेट.
octet rule for all nitrogen atom. Okay, so let's talk about first of all this nitrogen. 1 2 3 4 5 6. Obviously this is going to be incorrect because इस nitrogen ने octet follow नहीं किया. Let's talk about B. 1 2 3 4 5 6 7. It's also incorrect because इसने भी follow नहीं किया. Let's talk about D. 1 2 3 4 5 6 7. Obviously it's going to be incorrect because इसने भी follow नहीं किया. Obviously C is going to be the right answer. And why C is going to be the right answer? Let's check. 1 2 3 4 5 6 7 8. That means कि इस nitrogen ने octet follow किया. Let's talk about this nitrogen. 1 2 3 4 5 6 7 8. Follow octet rule. Let's talk about this nitrogen atom. 1 2 3 4 5 6 7 8. Follow octet rule. 1 2 3 4 5 6 7 8. Follow octet rule. 1 2 3 4 5 6 7 8. Follow octet rule. So all nitrogen atom in this structure is following the octet rule, which is why it is the most stable anion. It is the most stable ion. All right. आप चाहें तो इसके अंदर सर्कल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. सर्कल्स जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली उससे आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, ये थर्ड, ये फोर्थ, last but not the least, ये fifth. That's how you need to draw a dot and cross diagram in N5 plus molecule, N5 plus ion. All right. I hope it makes sense to you. हमने एक एक इंडिविजुअल नाइट्रोजन को भी चेक कर लिया और हमने सर्कल करके भी दिखा दिया कि किस तरह से चेंज हुए होंगे. Okay. So let's move on to the next question. That is question number 9. Question number 9. Okay. Not a big issue, I think so. 1.8 gram of water. So guys, the MR of water is 18. ये आपको खुद से calculate करना है. Okay. Heated to 227 degrees Celsius. Guys, 227 में 273 add करो, so you will get what? 500 Kelvin. Okay. In a sealed container turns to steam with a pressure of 200 kilopascal. इस kilopascal को pascal में convert करो. तो kilopascal को pascal में convert करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सब जानते हैं कि 1 kilopascal equals to 1000 kilopascal, right? If we have 200 kilopascal, so it's going to be how much? So 200 into 1000 is going to be 200,000 Pascal. All right. Now the question is, what is the approximate volume of the container? Or simply, I need to apply the general gas equation, that is ideal gas equation. PV equals to nRT, और आप जानते हैं कि जो N है वो number of moles per unit volume होता है, तो हम pressure volume as it is रखते हैं, mRT as it is रखते हैं, over mR कर देते हैं. ठीक है. We need to find out the volume. तो volume को हम यहाँ ले लेते हैं. I'm running out of space. Let me check. इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं. Oops, यहाँ कर लेते हैं. ठीक है ना? Make sense. अब हम यहाँ से volume लेते हैं. So volume calculate करने के लिए mass मेरे पास है 1.8. R की value is fixed, given in the table at the end of the paper. That is 8.31. Temperature is 500 Kelvin. ये आ गया आपके पास. Divided by MR of water is 18, and pressure is going to be 200,000 Pascal. So volume is going to be here from 2 ये हो जाएगा 0.002 meter cube, and 0.002 meter cube is basically B. So B is going to be the correct answer. Okay. Question number 10. Question number 10 is quite technical. When equation is correctly balanced, what is the value of C? So we need to find out the value of C. Where is C? Oh, we need to find out the value of this. Okay. हम इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले.
C2H4 plus H2O plus H plus, then 2MnO4 negative. Oh, no, 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 no. Wait. ये भी इधर ही है. Arrow C2H6O2 plus Mn2 plus. Okay. Okay. According to ion electron rule, which we have done in the class, charge needs to be balanced on both the sides. Okay. Charge needs to be balanced on both the sides. First of all, how many manganese here? 2. So मैं यहाँ पर 2 apply कर देता हूँ. Okay. Now how much charge here? 2 times 2, 4 plus. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी चार्ज कितना होना चाहिए? 4 plus. इस वक्त मेरे पास कितना है? 2 minus. तो 4 plus करने के लिए I need to put 6 here because 6 plus and 2 minus becomes plus 4. That's an easy thing. So we need to put 6 here. So 6 is going to be the right answer. Okay, I repeat again. हमारे पास यहाँ पर मैग्नीज कितने मोल्स थे? 2. तो सबसे पहले मैंने मैग्नीज को बैलेंस किया, यहाँ पर 2 लगाया. 2 times 2 becomes 4 plus. इसका मतलब प्रोडक्ट साइड पर 4 plus चार्ज है. रिएक्टेंट साइड पर भी 4 plus चार्ज होना चाहिए. इस वक्त कितना चार्ज है? 2 minus. इस 2 minus को 4 plus में कन्वर्ट करने के लिए I will use 6 hydrogen ions here, and the value for C is basically 6, which is why 6 is going to be the right answer. Anyhow, question number 11. Let's talk about 11. The main stage in the contact process is in the equilibrium mixture. Which row describe the effect of the named condition on the equilibrium yield? So first of all, you should know that this reaction is exothermic because its delta H value is negative. All right. दूसरी बात, equilibrium yield की बात कर रहे हैं एग्जामिनर हमारे साथ. और तीसरी बात ये कि यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं हमारे पास? 3. ओहो, 3 मोल्स. और यहाँ कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स. ठीक है. So if I'll use a catalyst, definitely it has nothing to do with the equilibrium yield, which means catalyst has no effect on the equilibrium yield, and therefore this might be the correct answer. Obviously C and D is incorrect, so competition exists between A and B. Now if you increase the pressure, obviously here we have moles, more number of moles, here we have less moles. So if we increase the pressure, equilibrium favors towards right hand side. If equilibrium favors towards right hand side, amount of sulfur trioxide increases. This increases the yield of SO3. So increases the yield of SO3 is this. Okay. High temperature. Since the reaction is exothermic, and if you increase the temperature, according to Lee-Shetty's principle, equilibrium favors towards left hand side. This decreases the equilibrium yield of sulfur trioxide. So decreases the equilibrium yield of sulfur trioxide, and therefore we conclude that B is going to be the right answer. Question number 12. X and Y are oxides of different period 3 elements. X and Y are oxides of different period 3 elements. Different period 3 elements. If 1 mole of X is added to water, the solution form is neutralized by exactly 1 mole of Y. What could be the identities of X and Y? Okay. तो मैं सबसे पहले ऑप्शन ए को देखता हूँ, बल्कि मैं ऑप्शन ए को नहीं देखता हूँ, मैं P4O10 को देखता हूँ. अगर मैं P4O10 को वाटर में प्लेस करता हूँ, तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू phosphoric acid, that is H3PO4. All right. Now the issue is that H3PO4
is now reacting with aluminum oxide, converting into aluminum phosphate. So AlPO3 plus 3H2O. Okay. So how many aluminum we have? We have phosphate. We have how many hydrogen atoms? 3, 3, 6. 2 phosphate, 3 phosphate. यहाँ पर 4 अप्लाई करो, यहाँ पर 2 अप्लाई करो, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर 4 अप्लाई करो, एंड ऑब्वियसली आपके पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12, तो यहाँ 6 अप्लाई करो. अब आप नोट करो, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड 4 मोल है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 मोल है, जबकि वो आपसे कह रहे थे कि 1 मोल ऑफ Y एंड 1 मोल ऑफ X शुड रिएक्ट टुगेदर. तो यहाँ तो दोनों 1 मोल रिएक्शन नहीं कर रहे, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ओके, अब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिलेटेड बात कर लेते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर आप वाटर में प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू सल्फ्यूरिक एसिड, that is H2SO4. Now in this option we have aluminum oxide. So aluminum oxide is basically an amphoteric oxide. वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा. So it's going to be Al2SO4 taken 3 plus water. Okay, because we have 3 sulfate ions, we need to put 3 here. Now according to the equation it has 1 mole and it has 3 mole. So again 1:1 के ratio से reaction नहीं कर रहे, which is why it is also incorrect. P4O10 already मैंने dissolve किया हुआ है water के अंदर, तो phosphoric acid बनेगा. अब उसको मैंने reaction करवा रहा है sodium oxide से. So P4OH3PO4 को आप reaction करवा लो sodium oxide से. So it's going to be sodium phosphate Na3PO4. यहाँ 3 कीजिए, यहाँ 2 कीजिए, phosphate 2 plus water. अगेन ये 2 मोल है और ये 3 मोल है, इसका मतलब ये भी 1:1 के रेशियो से रिएक्शन नहीं कर रहा है. तो our right answer is going to be D. And why D is correct? Obviously D is going to be the correct answer, but why D? Because sulfur trioxide जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा. Now this sulfuric acid reacts with sodium oxide, converting into sodium sulfate and water. And now see, ये भी 1 मोल है आपके पास और ये भी 1 मोल है आपके पास. इसका मतलब ये आपका X था, 1 मोल था, और ये भी आपका 1 मोल है, तो दोनों 1:1 के रेशियो से रिएक्शन कर रहे हैं, and D is going to be the correct answer. I hope it makes sense to you. Question number 13. Compound Z is insoluble in water but soluble at low pH. Okay, this seems to be little bit tricky. Why little bit tricky? Because इसमें 2 चीजें हैं. The first one is low pH. Low pH means acidic solution. Oh, makes sense. See, if it is soluble at low pH, इसका मतलब this compound is soluble in acidic solution. Okay. All right. And also it has one more thing, which is very, very important: insoluble in water. So you guys know that barium chloride is soluble in water, so it's going to be incorrect. Barium chloride is also soluble in water, so it's going to be incorrect. Barium sulfate is insoluble in water, that's right, but in acidic solution it will remain insoluble.
Okay, also incorrect. So right answer is going to be an A, because barium carbonate is insoluble in water, first thing. And soluble in acidic solution, iska matlab when we add acid, it will react and dissolve into barium chloride, water, and carbon dioxide. Okay. Question number 14. Hot aqueous sodium hydroxide reacts with chlorine. So when hot aqueous NaOH reacts with chlorine, this reaction is called disproportionation reaction. You will get sodium chloride, sodium chlorate 5, and water. That's what we have done in the class. Which statement is correct? The oxidation number of chlorine and hydrogen both changes in the reaction. The oxidation number of chlorine changes, but oxidation number of hydrogen will remain same, which is why A is incorrect option. Okay. How come? See, chlorine is neutral. It has an oxidation state of 0. Over here, chlorine is -1. Over here, chlorine is +1. So basically, oxidation state of chlorine changes. That is +1 and -1. But hydrogen here is +1, and hydrogen here is also +1, which means hydrogen ki oxidation state will remain same throughout the reaction, and therefore A is incorrect. All right. Now the next is the oxidation number of chlorine in the products are -1 and +1. Incorrect. Oops, my bad. Wait. This chlorine has an oxidation state of +5. Okay, not +1. So in which is why ये -1 तो सही है, ये है हमारे पास, but इधर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +1 नहीं है. All right, इसलिए ये +1 पॉसिबल नहीं है यहाँ पर. If the aqueous sodium hydroxide is cooled, the reaction proceeds sodium chlorate 1 instead of sodium chlorate 5. That's right. That is the right answer. Okay. Now the next is sodium undergoes disproportionation reaction. So in the last paper, I have told you if an element exists in two different oxidation states in the same reaction, then it is called disproportionation reaction. And this disproportionation reaction takes place in chlorine, not sodium, because the oxidation state of sodium will remain same throughout the chemical reaction, that is +1. Okay. So this is incorrect. Let's move on to question number 15. Solid ammonium nitrate. Ammonium nitrate का फॉर्मूला होता है NH4NO3 is put into a test tube and solution X is added to it. So I'm adding solution X in ammonium nitrate. Okay. The resulting mixture is warmed. Okay, heat ki humne, and a gas is given off, is tested with a damp red litmus paper. The litmus paper changes color from red to blue. That litmus changes color from red to blue is basically alkaline gas. Okay, because he's saying a gas is given off. All right, so this gas must be alkaline because it changes red litmus into blue, and this alkaline gas must be ammonia because this is the only alkaline gas. Okay, so according to my lecture, when any ammonium salt react with any alkali, then always ammonia gas is given off. All right, then solution X needs to be an alkali, which means A or B में से कोई एक option correct होगा. C and D is absolutely wrong. Okay. Let's suppose हमने NaOH लिया है. Okay. और हम उसको अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन करवा रहे हैं. It will turn to sodium nitrate, ammonia, and water. Obviously, sodium ions, spectator ions, nitrate ions, spectator ions cancel out with each other. So the final equation is
hydroxide ions plus ammonium ions converting into ammonia and water. You guys know that it is a proton donor, and you guys know that it is a proton acceptor. So all alkenes are proton acceptor. In short, we can conclude that this role of X is basically the proton acceptor. So proton acceptor is here, proton acceptor is here, and obviously B is going to be the right option. Okay. Okay, sodium, magnesium, and aluminum are 3 elements in period 3 of the periodic table. Each element forms an oxide, which row is correct. Sodium oxide is basic. That's right. Magnesium oxide is amphoteric. So option A is incorrect. Okay. Sodium oxide is giant ionic. Magnesium oxide is also giant ionic. Aluminum oxide is also giant ionic. It is not simple molecular. Option B is incorrect. Sodium oxide is an ionic compound. It has high melting point. Magnesium oxide has a high melting point. And aluminum oxide is also an ionic compound, and it also has a high melting point, which says low, which means ye bhi galat. The right answer is going to be D. Let's talk about this. Sodium oxide is basic oxide, reacts rapidly with water to give an alkaline solution. So that's correct. Magnesium oxide has a giant ionic structure, so it slightly react with water. It is slightly soluble in water, so that's also the aluminum oxide has a giant ionic lattice with a strong electrostatic attraction. Obviously, it is insoluble in water. That's also correct. Okay, I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question. That is question number 17. Okay, guys, 17 question seems to be tricky. I think so. Let's read the question first. A student investigate calcium nitrate crystals by heating them in the apparatus shown. So I have calcium nitrate crystals, and let's heat them. So अगर मैं calcium nitrate को heat करूँगा, calcium oxide बनेगा, nitrogen dioxide बनेगा, और oxygen gas बनेगी, and that's our balanced chemical equation. Okay, under heating. So इस जगह पे हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट है और हम उसको यहाँ से हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों गैसेस जो है वो रिलीज होंगी, रिलीज होकर इस जार में आएंगी. इस जार में वाटर है, उस वाटर के अंदर NO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी बिकॉज NO2 गैस इज सॉल्युबल इन वाटर. और जब NO2 वाटर में डिसॉल्व होता है तो इट विल टर्न to an acidic solution due to the formation of nitrous acid as well as nitric acid. So this solution becomes acidic when NO2 is soluble in water. Okay. The litmus solution is going to be red to blue or blue to red. Obviously blue होगा, red में convert हो जाएगा क्योंकि acidic solution है. तो changes to red. तो changes to red ये भी है और ये भी है. तो either answer C or D. Obviously A भी गलत, B भी गलत. Obviously जब ये NO2 गैस यहाँ पर dissolve हो जाएगी water में और acidic solution बनाएगी जिसकी वजह से litmus changes from blue to red. तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और ऑक्सीजन गैस जो है जब रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है ये फ्लेम ज्यादा ब्राइटली बर्न होगा. ओके, तो लाइटेड स्प्लिंटर जो है वो ग्लो करेगा ज्यादा. ऑलराइट, तो जब वो ग्लो करेगा ज्यादा तो जाहिर सी बात है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. How does concentrated sulfuric acid behaves when it reacts with sodium chloride? We did this in class. That's your sodium chloride. And if I'm reacting with it, sulfuric acid, it is going to be converted into sodium sulfate, which is your salt, and hydrochloric acid. And this hydrochloric acid is basically your misty fumes.
okay, which is also called steamy fumes. So chlorine, the oxidation state of chlorine is here is -1. The oxidation state of chlorine here is -1, which means this concentrated sulfuric acid in this reaction specifically is not acting as an oxidizing agent. In fact, it is acting as an acid only. Therefore, A is going to be the right answer. Okay. Question number 19, which statement about nitrogen or its compound is correct? In the Haber's process, the temperature is kept high. That's right. To give a good equilibrium yield, that's absolutely wrong, because reaction of nitrogen and hydrogen in Haber's process is exothermic in nature. So if you raise the temperature, like in this case, obviously equilibrium favors towards left-hand side. And if equilibrium favors towards left-hand side, obviously we won't get a good equilibrium yield of ammonia. So in my view, A is going to be incorrect option. Nitrogen gas is unreactive, that's right, because of the strong nitrogen-nitrogen double bond. That's absolutely incorrect, because nitrogen-nitrogen triple bond hota hai, single bond nahi hota. Option C, nitrogen monoxide will react with carbon monoxide under suitable condition. That's right, actually. That's right, because we did this equation in the class. ये equation है 2NO plus 2CO arrow 2CO2 plus N2. That's what we did in the class. और ये reaction in the presence of catalyst होता है. So C is going to be the right answer. Why not D? The formula of ammonium sulfate is NH4SO4. And that's also incorrect, because ammonium sulfate ka formula is NH4 taken 2SO4. So option D is also incorrect. Okay. Let's move to question number 20. This seems to be, which pair of compounds are functional group isomers of each other? Functional group का मतलब ये हुआ कि functional group की nature change होनी चाहिए. Alcohol है तो ether, carboxylic acid है तो ester, aldehyde है तो ketone, alkene है तो cycloalkane. Okay, I hope you remember all these tools which we have discussed in the class. So it is an alcohol, it needs to be converted into an ether, but here we have butanal, which is an aldehyde. So I believe is incorrect, because alcohol will turn to ether, not aldehyde. Okay. Oh. Now that's your carboxylic acid and that's your ester. So carboxylic acid and esters both are functional isomers of each other. So that's the answer, I believe. For sure, I'm telling you. Hex 1-ene and hex 2-ene. This is also incorrect, because these are positional isomers. Examiner is asking about functional isomers, because of position of functional group is changed. Propane nitrile is basically CH3, CH2, CN. So molecular formula in दोनों का different है, obviously. So they are not going to be the isomers of each other. Okay. So B is going to be the right answer. Let's move on to the next question. That is question number 21. Which row identifies a suitable starting material and reagent that can be used to produce butane nitrile? First of all, structure of butane nitrile is this: CH3, CH2, CH2, CN. That is the structure of butane nitrile. So first of all, option A is incorrect, option C is incorrect, because hydrogen cyanide is only applicable for aldehyde and ketone. Only used for aldehyde and ketone, which is why A and C are incorrect. Now competition exists between B and D. So अगर मैं D से आपको प्रोडक्ट बना के दिखाऊं तो ये बनेगा CH3
CH2, 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 and then CN. Now, how many carbons we have? 1, 2, 3, 4, 5 carbon. If we have 5 carbons, this is propane nitrile. Oh, not propane, pentane nitrile. Examiner were asking about butane nitrile, which means it is also incorrect, and therefore B is going to be the right answer. Okay. Okay. Question 22. The diagram shows the structure of ethane dioic acid. Ethane dioic acid reacts with ethanol in the presence of a few drops of concentrated sulfuric acid to form a diester. The molecular formula of diester is this. What is the structural formula of this diester? Okay. This is your ethane dioic acid structure. And since it has 2 COH group, which means 2 moles of ethanol needs to react with it. All right, should react together. So 1 mole of ethanol is this, and second mole of ethanol is this. Now they are reacting together, converting into diester. Okay, so remember carboxylic acid से हमेशा OH, alcohol से H जाता है, चला गया. अब हम इसको लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, then CH2, then oxygen. Oxygen के बाद है C double bond O, C double bond O के बाद है C double bond O again. After that oxygen, oxygen के बाद है CH2 and then CH3. अब हम इसको अगर condensed form में लिखना चाहें, हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3, CH2, O, CO, then CO2 and then CH2, CH3. I think ये structure exactly B के अंदर available है, and therefore B is going to be the correct answer. Okay. Oh. Okay. Now the next question, that is question number 23. Let's move question number 23. The infrared spectrum shown was obtained from compound J. Which statement about J is correct? देखो 500 से 1500 fingerprint region होता है, उसमें कोई function group नहीं होता. After 1500 we have this peak. This is 1600, this is 16 something, right? So this peak ranges from 1600 to 1700 centimeter inverse, and this must be carbonyl group. On the other hand, एक peak आपके पास ये है. So we have carbonyl group, and here we have 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. This is 2900 and above, right? So cyanide absent. If cyanide absent, then it means A is incorrect. Okay. B is also incorrect because carbonyl is there, but cyanide is not there. Okay. Carbonyl is there, so this is right. Cyanide is not there, this is also right. So I believe C is going to be the right answer. Question 24. A section of a polymer chain is shown. Okay. What is the correct monomer? Guys, one thing. This is your carbon atom, 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 this is your carbon atom. And I think the same structure goes here. This one, this one, this one, this one, this one, and this one. And this is also carbon atom. ये यहाँ पर भी ऐसी है. Okay.
So I think this is going to be your fragment. अगर मैं बोलूं ये होगा आपका फ्रैगमेंट, और फिर देखो यही फ्रैगमेंट दोबारा से रिपीट भी हो रहा है आगे। ओके, सो अगर मैं इसी को लिख लूं यहां पर सेम, तो मैं इस तरह से कुछ लिख सकता हूं। ये आ गया आपका, बल्कि एक मिनट, ये आ गया, फिर ये आ गया, सही है, फिर ये एक ग्रुप आ गया आपका, फिर इससे एक ये ग्रुप आके ये आ गया, ठीक है, और ये जो है ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन होगी, और ये भी आपकी बॉन्ड कंटिन्यूएशन होगी। ओके, सो ये आपका रिपीटिंग यूनिट हो गया है। अब इस रिपीटिंग यूनिट से मोनोमर लाना है। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, सो हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हम इस तरह से लिखेंगे, ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये है, ये है, ये है। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर ये कंटिन्यूएशन है तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा आपके पास, राइट। सो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। और लेट्स चेक कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है, क्योंकि ये हमारा मोनोमर है। सो देखो ये आपका CH3, ये आपका CH, सो दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH, फिर दोबारा आपके पास CH है, ये आ गया CH, इस CH के साथ ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आ गया प्रोपाइल ग्रुप, इस CH के साथ ये CH2 और एक और भी है CH3। यस, वेट 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 वेट, मैंने एक लाइन मेरे ख्याल से मिस कर दी है। वेट वेट वेट, ये इस तरह से आएगा, सॉरी, अब सही है, अब सही है। लेट्स स्टार्ट अगेन। This is CH3, this is CH, this is CH3, this is CH, then this CH, then this CH, इस CH के साथ ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये आया प्रोपाइल ग्रुप आपके पास, इस CH के साथ ये CH2 है, ये आया CH2, इस CH2 के साथ ये CH3 है, ये आया CH3। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, इसका मतलब A is going to be the correct answer. Let's talk about the other stuff, okay, other portions. ये CH3 है और ये CH है, तो ये CH3 और ये CH आ गया, ठीक है। अब CH के साथ एक CH है, उसके बाद एक और CH है, ये आ गया CH, इस CH के साथ ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये आ गया प्रोपाइल ग्रुप। तो बेसिकली जो CH है उसके साथ CH2 CH3 है। नहीं 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 नहीं, हाँ, प्रोपाइल के साथ CH, फिर CH के साथ CH। ओ यस, ओ यस, बट द थिंग इज कि ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये उसने शिफ्ट कर दिया है दूसरी तरफ यहाँ पर, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप उसने शिफ्ट किया है, इसलिए ये गलत है। नो, ये क्यों गलत है? बिकॉज आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक इथाइल ग्रुप है, जबकि एग्जामिनर ने यहाँ पर दो इथाइल ग्रुप शो कर दी हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, CH के साथ प्रोपाइल। ओके, अब नोट करो, ये CH है, इस CH के साथ ये प्रोपाइल है, जबकि इस CH के साथ ये प्रोपाइल भी है और ये मिथाइल भी है। तो CH के साथ प्रोपाइल और मिथाइल नहीं है, इनफैक्ट इस CH के साथ, इस CH के साथ इथाइल है, प्रोपाइल है। एग्जामिनर ने इस CH के साथ प्रोपाइल तो लगाया लेकिन यहाँ मिथाइल कर दिया, इसलिए डी भी गलत। ओके, और यहां पर भी आई थिंक बी में भी यही है कि CH के साथ एक इथाइल है और एक मिथाइल है, ठीक है।
जबकि यहाँ पर जो CH है उसके साथ एक इथाइल है और एक प्रोपाइल है, which is why ये भी गलत था. Okay, my goodness, that's tough. Question number 25. Question number 25. Structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. How many non-cyclic isomers have molecular formula C5H10? C5H10 देखना है. Okay, चलिए C5H10 देखते हैं. और नॉन साइक्लिक है और आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, और फॉर्मूला ये होना चाहिए. और वो कह रहे हैं कि आप स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी देखोगे और स्ट्रक्चरल भी देखोगे. तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल की बात कर लेते हैं. तो हम सबसे पहले ये बना लेते हैं. नंबर 1 CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2. Since it is an alkene, since it is an alkene, which means one double bond is present between the carbon atom. अब obviously इससे चेन भी बनाऊंगा मैं, और इससे नॉन साइक्लिक कह रहा है तो इसका मतलब मैं फंक्शनल आइसोमर नहीं ले सकता. तो मैं चेन और पोजीशन देखूंगा इसके ऊपर. तो मैं सबसे पहले चेन देख लेता हूं. CH3, wait, CH3 CH2 C, ये CH3 आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये CH2. अब मैं इस CH3 को यहां शिफ्ट कर देता हूं. CH3 CH CH3 CH double bond CH2 1 2 3 4 5. Okay. Whew. 1 2 3 4 5. अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा तो CH3 CH2 CH3 डबल ये आ जाएगा. ठीक है. एंड देन इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, ये भी ओके. ये मैंने चेन बना दी है. अब मैं पोजीशन पे आता हूँ. ऑलराइट. सो ये मेरा सेकेंड आइसोमर हो गया, ये मेरा थर्ड आइसोमर हो गया. अब मैं फोर्थ आइसोमर की तरफ आता हूँ, और फोर्थ जो है वो मेरा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज कर देता हूं मैं. CH3 CH2 CH double bond CH and then CH3. Fifth, मैं इस CH3 को उठाकर इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता हूँ. इसका भी, इस पोजीशन का भी चेन बना लेते हैं. तो ये हो जाएगा CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH and then CH3. I hope it makes sense to you. ये यहाँ आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा. चेक करो. CH3 कार्बन, कार्बन के साथ एक CH3 then CH. ठीक है. ओके, तो हाउ मेनी आइसोमर्स वी हैव सो फार? 5. तो टोटल हमारे पास 6 आइसोमर्स हैं गाइस. इसके 6 कैसे हैं? बिकॉज मैंने स्ट्रक्चरल तो ये सारे बना के दे दिए आपको. 5 स्ट्रक्चरल है, लेकिन देखो इसमें सिस ट्रांस भी तो होगा. सो दिस गिव्स सिस एंड ट्रांस. सही है. सो ये मैंने सिस बनाया है, ट्रांस एक और ले लूंगा मैं. सही है ना. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5, और ये ट्रांस वाला 6 हो जाएगा. which is why D is going to be the right answer. तो मैंने स्टेरियो को भी देख लिया और स्ट्रक्चरल दोनों को देख लिया. I hope this makes sense to you. Next, an excess of dry HBr is warmed with compound Y. ठीक है. What is the major product of the reaction? Since it is an unsymmetrical reagent, it is an unsymmetrical alkene.
ऑब्वियसली मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। और मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, it goes to that double bonded carbon atom where we have more hydrogens. So एक हाइड्रोजन यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं HBr से रिएक्शन करवाऊंगा इसका, तो ऑब्वियसली HBr का जो H है और Br है वो रेड पेन से शो कर देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जी हम H और Br को कहाँ कहाँ ऐड कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ H और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ Br अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। सिमिलरली मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ H और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ Br। और आप जानते हैं कि जो अल्कोहल है, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इट कैन आल्सो रिएक्ट विद HBr। तो यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों मिलकर बना लेंगे वाटर, और इस OH की जगह पर अटैच हो जाएगा Br, तो ये हो जाएगा आपका Br। ओके, सो ये कहाँ पर लिखा हुआ है अब हमारे पास? ये लिखा हुआ है हमारे पास, positive part goes to that double bonded carbon atom where we have more hydrogen atoms. Guys, option A and B both are incorrect because अल्कोहल ने भी HBr से रिएक्शन करना होता है, एग्जामिनर ने अल्कोहल को यूज नहीं किया है। ठीक है, oh my bad, wait guys, wait guys, wait, ये डबल, उप्स 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 उप्स, वेट, ये डबल बॉन्ड है ना मेरे पास, तो इस डबल बॉन्ड में यहाँ पर H ऐड होगा, यहाँ ब्रोमीन ऐड होगा, तो बेसिकली मैं यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर रहा हूँ और H जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है, चेक करें अब कहाँ पर है। ये Br और ये CH3 ये रहे, ये साइक्लिक रिंग ये रही, इस साइक्लिक रिंग में इस कार्बन के साथ Br है, ये आ गया, इसके साथ ये CH2Br है, तो ये CH2Br ये है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, क्वेश्चन 27, which reaction would produce propanic acid as one of its products? One of its products, one of its products, one of its products, one of its products. Okay. Which reaction would produce propanic acid as one of its product? I think A is going to be the right answer. क्यों? मैं लिख देता हूं ये बात आपको, CH3 taken to C double bond CH CH2 CH3। ऑलराइट, आप सब जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि डबल बॉन्ड के साथ अगर CH हो तो वो हमेशा CWH में कन्वर्ट होगा, तो CH3 will remain as it is, CH2 will remain as it is, and this CH will turn to CWH, and that is your propanic acid. ओके, प्लस डबल बॉन्ड के साथ अगर C है तो इट विल टर्न टू कीटोन, तो इट्स गोइंग टू बी प्रोपेनॉन। ये हमारा ऑप्शन ए था, सही है। तो विच इज वाई हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें प्रोपेनिक एसिड ऑप्शन ए से मिल रहा है, विच इज वाई ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 1 2 3, यहां से प्रोपेनिक एसिड मिलेगा हाइड्रोलिसिस से, लेकिन क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है इसलिए वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज वाई बी इज इनकरेक्ट। Heating ethanol with acidified K2Cr2O7 under reflux, so it will turn to ethanoic acid, not propanoic acid, which is why it is also incorrect. Then ethanol react with HCN, it will turn to cyanohydrin, not propanoic acid, which is why it is also incorrect. Okay, that's what we have done. We have done this
concept in the class, we have done this concept in the class, we have done this concept in the class. यहाँ पर salt of carboxylic acid बनेगा, इसलिए हमने ऑप्ट नहीं किया इसको। यहाँ पर इथेनोइक एसिड बनेगा, हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है इसलिए नहीं यूज किया। और हम यहाँ पर एक्चुअली साइनोहाइड्रिन बनेगा, और साइनोहाइड्रिन इज नॉट प्रोपेनोइक एसिड, ओके, इसलिए हमने इसको रॉन्ग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28, माय गुडनेस, दैट्स अ क्रेजी स्ट्रक्चर, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। Compound X is treated with an excess of lithium aluminum hydride. Guys, this is your reducing agent. Okay, the reaction is allowed to go to completion. What is the structure of organic product? अच्छा देखो, this is your ketone and this is your carboxylic acid. So जब तुम इसको reduce करोगे तो obviously it will turn to secondary alcohol and primary alcohol. So this is going to be your secondary alcohol and this is going 1 2 3 1 2 3, and this is going to be your primary alcohol, that is CH2OH. So इस पूरे को मैंने किस तरह से लिख दिया, CH2OH. okay, this is CH2, this is CH2, this is CH2, this is CH2, 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 और ये रिंग और ये रिंग और ये OH. ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर चेक करो, ये कहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3, कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ, तो ये गलत क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया इसलिए ये भी गलत। और 1 2 3, ये कीटोन में कन्वर्ट, ये कीटोन एज इट इज इसलिए ये भी गलत, तो राइट आंसर इज डी। और देखें डी क्यों सही है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये रहा, उसके बाद CH2 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 है, ये रहा CH2 CH2 CH2, और ये CH2OH एग्जामिनर ने स्केलेटल फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, ओके, विच इज व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आप चाहें तो आप इसको स्केलेटल कर सकते हैं, मसला नहीं है। इसको स्केलेटल करने का तरीका ये होगा कि ये आ जाएगा O CH2 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 CH2OH, ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। Anyhow, question number 29, what is the skeletal formula of the compound formed when this compound is heated under reflux with K2Cr2O7? You guys know that K2Cr2O7 never react with alkene. इसका मतलब reaction takes place with primary alcohol, and primary alcohol will turn to carboxylic acid when heated under reflux with this reagent. So obviously इसका जो product है वो तुम्हारे पास होना चाहिए CH3 CH double bond CH and then COOH. check करो ये product का है, this is CH3, this is CH, this is double bond, this is CH, this is aldehyde. So it's not going to convert into aldehyde because of heat under reflux condition. Obviously option A is incorrect. Then CH3 CH double bond CH and then COOH, and that's my answer. B is going to be the right answer. Why not C? C is also incorrect. Why? Because ये CH3 CHOH है, alkene never reacts, okay, alkene never reacts. Sim, alkene never reacts. Alkene never reacts with K2Cr2O7. Okay. Question number 30. My goodness. The diagram shows the structure of compound Q. Okay. Two of the rings X and Y contain carbon-carbon double bond. Which row is correct? इससे पहले कि हम आगे जाएं, जरा देख लेते हैं कि क्या-क्या चीजें हमारे पास। This is your ester linkage, I mean ester bond. This is also your ester bond. This is your secondary alcohol, and this is your alkene. So we have actually three different functional groups. The first one is ester, the second one is secondary alcohol, the third one is alkene. And we have two cyclic rings here, which is represented by X and Y respectively. Push lete hain, the number of ester group in one molecule of Q. So this is your ester. And this is your ester. So we have two ester groups. So either C or D is going to be the correct option. So A and B is absolutely incorrect.
Now description of ring X and Y, both are planar, both are planar, both are planar, both are planar. Both are planar. Oh, sorry. Both are planar. Neither is planar. Oh, my goodness. Achha. See, this two carbon atoms are sp2 hybridized. इसका मतलब these two carbons are planar with an angle of 120 degree. But issue is, apart from these, this carbon, this carbon, this carbon, this carbon, this carbon, this, not this one, in fact, this carbon, all of them are sp3 hybridized. So they have tetrahedral geometry. इसका मतलब all carbon atoms in this ring are not planar. Not planar. So not planar is this, and therefore right answer is going to be D. I hope this makes sense. Oops. Question 31. और ये जो फॉर्मेट है 31 का, ये अब नहीं आता, राइट? लेकिन हमें एग्जामिनर ने कहा कि अगर तीनों स्टेटमेंट ठीक है तो आंसर इज ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है तो आंसर इज बी, सेकंड और थर्ड ठीक है तो आंसर इज सी, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है तो आंसर इज डी. बट दिस आर नॉट गोना कम इन योर पेपर. बट ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. आपके एनालिटिकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं. रिलेटिवली टफ होते हैं बट बहुत अच्छे हैं, ठीक है? और मैं रिकमेंड करूंगा कि हर बच्चे को करने चाहिए प्रैक्टिस के लिए. Carbon and nitrogen are adjacent in the periodic table. Which properties do they both have? There is an empty 2p orbital in each atom of the element. In each atom of the element. That's absolutely incorrect, because अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं ऑन द ग्राउंड स्टेट, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, और ये हो जाएगा आपके पास 2p2. So carbon do have empty 2p orbital, right? Let's talk about nitrogen. Nitrogen का atomic number is 7. 1s2, 2s2, and then 2p3. तो नाइट्रोजन के पास कोई भी 2p ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, which is why first statement is incorrect. Next, the principal quantum number of the highest occupied orbital is 2. बिल्कुल सही बात है. This is 2p, 2s, this is 2p, this is 2s, this is 2p. The 2p orbital is the highest principal quantum number. So that's correct. Next is they can form compounds in which their atoms forms 4 covalent bond. Exactly, this is also correct, because carbon forms methane, which has 4 covalent bond, and nitrogen forms ammonium ions, which also have 4 covalent bonds. So third statement is also correct, and therefore C is going to be the correct answer. The strong hydrogen bonding present in liquid water causes an increase in which properties? Increase in which property? Due to hydrogen bonding is strong. So मैंने आपको क्लास में बताया कि विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, बिकॉज जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लिक्विड उतना ही ज्यादा विस्कस होगा. जस्ट लाइक हनी इज मोर विस्कस देन वाटर बिकॉज हनी एक्सिबिट स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, greater extent of hydrogen bonding. Similarly, those compounds जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जस्ट लाइक वाटर एक्सिबिट extensive hydrogen bonding, which is why its boiling point is greater than that of HF as well as in ammonia. You can see these reasonings in my lecture. Also surface tension ज्यादा होगी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी और वाटर में surface tension ज्यादा होती है. So right answer is A. Question number 33. A reaction between carbon and oxygen is shown. How can the standard enthalpy change of this reaction be described correctly? Standard enthalpy change of formation. Standard enthalpy change of formation. Okay. Okay, so 1 mole of compound is formed from its constituent elements under standard condition is called standard enthalpy change of formation. ये definition इस equation पे follow हो रही है, इसका मतलब ये first statement ठीक है. Next पढ़ते हैं standard enthalpy change of combustion. Whenever we talk about combustion, it has to be the complete combustion, and whenever carbon undergoes complete combustion, it will turn to carbon dioxide, not carbon monoxide, which means second statement is incorrect. So if second statement is incorrect, obviously answer is D. Okay.
According to the key, answer is D. Question number 34. Hydrochloric acid reacts with zinc. What will increase the rate of this reaction but will not change the Boltzmann distribution of molecular energy? Will not change the Boltzmann distribution. 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 So temperature changes the curve. Okay. So temperature changes the Boltzmann distribution curve. So catalyst is fine because catalyst से rate of reaction जो है वो increase होगा, लेकिन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है. सही है. एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने पहले कहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो कंसंट्रेशन ज्यादा रेट ज्यादा, इसका मतलब ये भी ठीक है स्टेटमेंट. नंबर 3, इंक्रीज इन टेम्परेचर. Increase in temperature changes the Boltzmann distribution curve, and he is asking if one will not change, which means third statement is incorrect, and therefore answer is B. Okay, answer is going to be B. Oh, next. The element astatine is below iodine in group 17 of the periodic table. Which statement concerning astatine are likely to be correct? It is a dark colored solid at room temperature. That's right, because down the group color becomes darkened. Next is, it is a more powerful oxidizing agent. That's absolutely incorrect, because down the group oxidizing power decreases. Down the group ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस. तो अगर सेकंड गलत हो जाता है तो ऑब्वियसली 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मेरे पास यहाँ पर. सही है ना, सिर्फ 1 का कॉम्बिनेशन है मेरे पास. तो अगर सेकंड गलत हो जाता है तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. ओके, सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. देखो ट्रिक ये है कि अगर फर्स्ट गलत हो जाए तो सी होगा, और अगर सेकंड गलत हो जाए तो 1 डी होगा. इस तरह से जज कर लो बात को. ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है. Which statements are correct? Aluminum chloride dissolves in water to give an acidic solution. That statement is absolutely right, because हमने आपको थ्योरी में पढ़ा है कि AlCl3 जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है because of the presence of vacant pz orbital, so वो white precipitates बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, और साथ में मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl भी देता है. Next is magnesium chloride dissolves in water to give a solution of pH 7. बिल्कुल सही बात है, because magnesium chloride is ionic compound and soluble in water. So this is also right. Next, sodium chloride dissolves in water to give an alkaline solution. Not at all. Sodium chloride is an ionic compound. When it is dissolved in water, it will give you a neutral solution of pH 7 according to my lecture, which means this one is incorrect, and therefore B is going to be the right answer. Ethanol and hydrogen cyanide react together. The reaction mechanism involves cyanide ions. Which statement about this mechanism is correct? देखो reaction start हुआ cyanide से, मुझे वापस cyanide मिल रहे हैं, acts as a catalyst. First statement is right, and cyanide is a negatively charged ion, और नेगेटिवली चार्ज आयन इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है. इट इज एन एडिशन रिएक्शन. yes, it is an addition reaction. It is also called nucleophilic addition reaction. So right answer is A. मुझे कैसे पता चला? मुझे ये पता चला कि मैंने साइनाइड को ऐड किया, तो आप नोट करें ये आ गया साइनाइड, फिर मैंने इस हाइड्रोजन आयन को ऐड किया, ये आ गया हाइड्रोजन आयन, तो बेसिकली मैंने क्या चीज ऐड की? HCl ऐड किया. ठीक है, तो इट इज एन एडिशन रिएक्शन. इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि it is an aldehyde and all aldehyde undergoes nucleophilic addition reaction. Since it is an addition reaction, इसलिए हमने इसको ऑप्ट कर लिया है. आप इस तरह से भी सोच सकते हैं बात को.
Question number 38. Which compound will produce a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine? Alkaline aqueous iodine के yellow precipitate उस वक्त आते हैं जब आपके पास CH3CO ग्रुप अवेलेबल हो या फिर CH3CHOH ग्रुप अवेलेबल हो। तो मुझे और आपको ये देखना है कि ये दोनों ग्रुप्स कहां पर अवेलेबल है। ठीक है, स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर मैं इन ग्रुप्स का लिखूंगा तो इसका हो जाएगा CO इस तरह से, और इसका हो जाएगा CH3CHOH। तो मैंने और आपने ये देखना है कि ये कहां पर है। ये देखो ये रहा, जैसे CH3CHOH है ना, यहाँ पर है CH3CHOH, ये आ गया। और तो कहीं पर भी नहीं है। ऑलराइट, इसमें नहीं है, there is no CH3CHOH. Okay, this is your aldehyde, this is your tertiary alcohol, this is your alkene. तो इसमें तो नहीं होगा, सिर्फ सेकंड में और थर्ड में। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C. Okay, oh my goodness. 39. Which statement applies to tetrafluoromethane? Tetrafluoromethane, टेट्राफ्लोरोमीथेन CF4 की बात कर रहे हैं एग्जामिनर। ओके, एग्जामिनर बात कर रहे हैं CF4 की। वो कह रहे हैं rapidly decomposed by ultraviolet radiation. Not really, because CF bond is very strong bond. CF is strong. CF is a stronger bond. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ब्रेक नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। CCl बॉन्ड वीक होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज लेस हार्मफुल टू ओजोन लेयर देन डाइफ्लोरोमीथेन। दैट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ से जो अमाउंट ऑफ क्लोरीन रेडिकल है वो कम हो जाएगा। इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी, एंड टेट्राहीड्रल इज बेसिकली नॉन प्लेनर। Okay, the right answer is going to be C. Let's do the last question. Which statement comparing ethene and ethane are correct? The bond angles in ethene are larger. बिल्कुल सही बात है, that's correct, क्योंकि ethene का bond angle 120 होता है और ethane का bond angle 109.5 डिग्री होता है। तो ये statement बिल्कुल ठीक है, सही है। एक मिनट होल्ड करो। ethane का एंगल है 120 डिग्री और इसका एंगल होगा 109.5 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ethene reacts much more quickly with bromine in the dark than ethane does. That's also right. That's also correct because ethene contain functional group, all right, whereas ethane does not have any functional group. It will take time to complete the reaction. Third statement क्या है? Complete combustion of 0.01 mole of ethene and ethane produces the same volume of gas at room temperature and pressure. मुझे लगता है same volume of hydrogen gas होना चाहिए at RTB. It should be the correct answer. और मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज, चले मैं वर्किंग करके दिखा देता हूँ आपको। दिस इज C2H6 इथेन। अगर मैं इसकी कंबशन करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर होता है रूम टेम्परेचर, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1 मोल, दिस इज 2 मोल। अगर ये 0.01 मोल है तो बताइए ये कितने मोल होगा। तो मोल्स ऑफ CO2 आपके पास हो जाएगा 0.02 मोल, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, राइट। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है तो मैं 0.02 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24 DM³ से। तो 0.02 into 24 is going to be 0.48
DMQ. Okay, this is my first, this is my second. इथीन से रिलेटेड कर लेते हैं. अगर मैं इथीन की कंबस्शन करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, so because of complete combustion it will turn to carbon dioxide and water. Water again at room temperature liquid होगा, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है. This is 1 mole, this is 2 mole. अगर आपके पास 0.01 mole है तो obviously moles of carbon dioxide आपके पास 0.02 हो जाएंगे. I was right initially. सही है. सो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं डिटरमिन कर रहा हूँ यहाँ से, तो 0.02 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 24 से, तो इट गोइंग टू बी 0.48 BMQ. तो इन दोनों में वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट मेरा ठीक था, एंड देयरफॉर A इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. ओके, मुझे क्यों अंदाजा हो गया था इसको देखते के साथ ही, बिकॉज इथेन हैज 2 कार्बन, इथेन हैज 2 कार्बन, व्हिच मींस यू विल गेट 2 moles of carbon dioxide. Since you are getting same amount of carbon dioxide, same number of moles of carbon dioxide from both the compound, so obviously the volume of carbon dioxide would also be same. All right, that's the end of this paper. Thank you very much.